everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. 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 अस्सलाम वालेकुम सामईन, आप सुन रहे हैं सलाम बीसीआर और मैं हूं आपका मेज़बान। आज मंगल की शाम 6:13 हक अनवार अल हक आपको कहता हूं खुशामदीद। Love and peace and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on our face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. अस्सलाम वालेकुम जी हाँ, आप सुन रहे हैं सलाम बीसीआर मीडिया वेब 1566 और AM पे। इसके अलावा आप हमारी नशियात को सुनते हैं salamBCR.com की वेबसाइट पर project29.org.uk और इसके अलावा दुनिया के किसी भी खिते में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। टाइम पाकिस्तान में मेरा ख्याल आज इस वक्त 10:14 हुआ होंगे, क्योंकि 4 घंटे आप हमसे आगे हैं ना जी। तो आप लोग तो आप मौज मेले कर रहे होंगे। चलो खैर, हम भी अब इंशाल्लाह बस 2 घंटे में अपनी अफ्तारी करेंगे, फिर भी हम भी मौज मेले करेंगे। तो जी, अगर आप हमें सुनना चाहते हैं अपने मोबाइल ऐप पे, तो वो है radio.garden.com। रेडियो गार्डन पे आप हमें आसानी से सुन सकते हैं और streamer.com पर भी आप हमारी नशरियात को बखूबी पा सकते हैं। कमर भाई, थैंक यू सो मच, हमेशा आप हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे मेरा प्यारा। हमारे साथ अब अपने मैसेज भेजा जावेद भाई ने, जावेद फ्रॉम ओल्डम। जावेद भाई ओल्डम, थैंक यू सो मच। कहते हैं, क्या कहते हैं, द लास्ट डीजे मैं अब नाम उनका भूल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल आप समझ गए होंगे। उन्होंने ये पैगाम भेजा, कहते हैं कि अवाम जोश में होश खो रहे हैं, अवाम जोश में होश खो रहे हैं। सिपा सलार पर भरोसा रखें, दुश्मन को भौंकने और खुश होने का मौका न दें, बस थोड़ा सब्र करें, सारी धंध छट जाएगी, मंजर वाज़ा होगा इंशाअल्लाह। जल्दबाजी का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत और हिम्मत और दिमाग से काम लें। दुश्मन भी चाहता है कि आदमी और मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के अंदर नफ़रत पैदा हो, लेकिन हमें बस अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। रिटायर्ड जनरल हमीद गुल साहब ने की पेशन गोई सच साबित होती नज़र आ रही है। इमरान खान का नाकाम होगा और इसके बाद ये निज़ाम क्या होगा, इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अवाम पाकिस्तान अब सड़कों पर निकली हुई है, उनका जोश, मेरा ख्याल उसकी जोश की कदर करनी चाहिए हमें, क्योंकि शुक्र है मेरे अल्लाह का कि किसी ने हुक्मरान पाकिस्तान ने लोगों को ये शाऊर तो दिलाया और उन्हें ये ख़बर हुई कि हमारा मुल्क है और हमने इसकी जो देखभाल, इसकी जो प्रोटेक्शन है जी, हमने करनी है अवाम पाकिस्तान। और मज़े की बात है कि बहुत से नौजवान बच्चे आजकल सुनने को मिलते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जिनका जज्बा देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह गवाह, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? देखिए, मुल्कों के, कौमों के अप्स एंड डाउन यकीनन आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई कौम, कोई लोग अपने इससे ना सीखें तो फिर मेरा ख्याल है वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो लगता है कि इमरान खान की मेहनत रंग ला रही है। इंशाअल्लाह
पाकिस्तान में बेहतरी होगी, बेहतरी यकीनन बेहतरी होगी। तो मैं मेरी दुआ तो यही है। अगर आप कोई अपना सोच विचार हमारे साथ शेयर करना चाहें तो मेरी आपसे गुजारिश इतनी सी है कि आप फ़ोन उठाएं, नंबर मिलाएं। फ़ोन है 07990264 07990264 और इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर 01612219872 01612219872, इस पर भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें सुनते हैं मीडिया वेब 1566 पर, और आप हमारे साथ यूट्यूब पर भी इस वक्त शामिल हो सकते हैं। हैं जी, शामिल अगर आप होना चाहें कि यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे भी आप जाके शामिल हो सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि यकीनन आप प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए ताकि हमें भी खबर हो कि हमारे प्यारे हमारे साथ हैं। अब्दुल जवार भाई, थैंक यू सो मच। सैफुर रहमान, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम दैट यू ऑलवेज डू, मेरा प्यारा भाई। और अब वो कुछ अरसे के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं जी। देखो, कई लोग होते हैं उनकी किस्मत में छुट्टी होती है, हमारी किस्मत में ना छुट्टी है, ना छुट्टी ना छुट्टी ना छुट्टी। चलो बहरहाल किसी ने तो ये दुख झेलने हैं ना। खान साहब अगर पिछले 3.5 साल से रोज़ाना दफ्तर जाते रहे तो आजकल पता चला है कि मियाँ शहबाज शरीफ भी 9 बजे नहीं 8 बजे द मिसेज किक्स यू आउट ऑफ बेड। मियाँ साहब, मिसेज किक्स यू, आज आपके पास होगा भी क्या, किक्स यू आउट ऑफ बेड एंड देन यू हैव टू बी इन द ऑफिस बाय 8 o'clock। ये जो मक्कारियाँ हैं ना, ये कितने अरसे के लिए चलेंगी? मियाँ साहब, कितने अरसे के लिए चलेंगे? कितने अरसा आप ये चलाएंगे, ये शोर शराबा है जी? लोगों की आंखों में धूल झांक रहे हैं आप। ऐदा ना मियाँ साहब करो, की कर दो हूँ तो तुहाडियां कबर च लत्तां साढ़े तरह। इस वास्ते ज़रा सोचो कि अगे जाके मियाँ साहब की बनेगा, अगे जाके की बनेगा। एनीवे, किसी दूसरे दा असीं की कह सकते हैं, अपने बारे ही सोच सकते हैं मेरे भैन भराओ। अच्छा, दूसरी गल ये हैगी कि हुण अगर तुसीं ड्राइव कर रहे हो तो मेरी तुहाडे गुजारिश इतनी है कि अपना ज़रा एहतियात वरत के तुसीं ड्राइविंग करनी है। क्योंकि तुहानूं पता कि एक्सीडेंट होने कोई टाइम नहीं लगता। अख इधर हुई तो ध्रां करके एक्सीडेंट है जी। पिछले दिन मैं इस तरह देखिए, अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह, बच गए सारे, तो कोई ख़ास नुकसान नहीं होया। तो मैं नहीं चाहता कि तुहाडा साडे प्रोग्राम की वजह ना कोई नुकसान होए। बहरहाल असीं चाहांगे कि तुहानूं खबरदार कर देवीए, तुहानूं अपने जो सूरत हाल इत्थे हैगी है उहदे बारे च आगाह करिए, और पाकिस्तान च जो है उहदी भी कोशिश करते रहांगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि तुसीं लोग भी ज़रा हिम्मत करो। मैंने भी दसो ना कि भाई, क्योंकि तुहानूं पता कि मैं भी मसरूफ ज़रा ज़िंदगी गुजर रही है। रमज़ान दे विच मैं सोचदा सी कि चलो ज़रा अपनी इबादत या अल्लाह तौबा। अफसोस के टाइम जड़ा ना बड़ा टाइम मुख्तसर, और कली जान ते कम हज़ार। कली जान मैं इतराज़ नहीं कर रहा, कली जान सिर्फ मतलब कहता है कि कम करने वाला एक बंदा हैगा, और कम बड़े ने। इंशाअल्लाह ये भी वक्त गुजर जाएंगे मेरे प्यारे बहन भाई। तो अगर आप कोई अपनी बात हमसे शेयर करना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि आप भी ज़रा फ़ोन उठाएं, नंबर मिलाएं। फ़ोन है 07990264 इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं और ऑन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ना। जी चलिए, अब मैं आपको एक प्यारा सा कलाम सुनाने जा रहा हूँ। आजा शामा पै गया फैज़ अली फैज़, सुनते रहिए सलाम BCR, आपका अपना वेरी लोकल रेडियो। रोग वजोग दे सोग हजारा, सजना तेरे ना दे ओ ना पाने रोग क़यामत बिछड़े यार जिना दे। तकनियां रावे छेती खर आवे, तकनियां रावे छेती खर आवे, मैनू तेरे वेखने दा चाऽ
ਘਰਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸਾਂਭ ਲਾਵੇ ਮੁੜ ਘਰਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਾਏ ਦੇ ਖੜੀ ਕੋਲ ਮਾਏ ਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸੀ ਭਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸੀ ਭਲਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸਈਆਂ ਜ ਰੋ ਪਈਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਸਈਆਂ ਜ ਰੋ ਪਈਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਸਈਆਂ ਜ ਰੋ ਪਈਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਏ ਵਸਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵਕਤ ਨਿਦਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਏ ਵਸਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੋਮਨੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਤਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੋਮਨੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਤਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੋਮਨੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਪਤਨ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾ ਇਸੇ ਬੇੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸ਼ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾ ਇਸੇ ਬੇੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾ ਸ਼ਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈ
किथे बह गया सारा दिन लै गया खाकी किथे बह गया पंछी भी कर गए ने तेनू किन्ने गली ला लिया शामा पै गईयां पंछी भी कर गए ने अच्छा शामा पै गया फैज़ अली अजाज की आवाज़ में आपने ये प्यारा 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 कलाम सुना मेरे प्यारे बहनों आपको कहता हूँ खुशामदीद सलाम BCR के स्टूडियो से अब आपको मैं एक मुख्तसर सा पैगाम सुनाऊंगा जो कि साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट में शेख इमाम हमारे एक दोस्त ने हमें भेजा तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ इसको भी शेयर कर लूँ लीजिए सुनिए देखिए हकीकत मबनी जो चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे बहनों भाई दुनिया में कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान उनका ज़मीर जागता है और फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं देखिए ये क्या कहते हैं losing their lives, being raped and murdered. There's no, when the people in Palestine are losing their lives, being raped and murdered, there's no cry from anybody, no passion. When the same thing happens in Syria, we hear nothing. When the same thing happens in Libya, we hear nothing. When the same thing happens in Iraq, we hear nothing. When the Ukrainians are violating the rights of other Ukrainians, particularly in the Donbass region, there's nobody crying for those people. What is the reason for that? What about India? Why is there nobody in this country raising the concerns of the Indian minorities, of the Christians and the Muslims whose rights are being violated by the Indian government? Nobody in this country is saying anything about it. Now, NATO went on and bombed many of the Russian allies. Russia could do absolutely nothing about it and stayed out of it. What did Russia say? Demilitarization. Stay away from my Russian borders. If you notice what has been happening since 1990, they are coming closer and closer and closer to the Russian border until they will make Russia so weak that Russia will have no other option but to give in to them. That is what it is all about. But who is the root cause of this whole problem? It is clearly the West and the United States of America that is the root cause of all the mayhem and chaos and destruction all over the world. Let's talk about the biological laboratories which is funded by the Pentagon in Ukraine. Where is it coming from? Why are they getting involved in those? Now, what is Russia asking for? Russia is saying, stay away from my borders and stay away from me. All you have been doing, and remember, Ukraine is being used as a fool by the United States and the West, and they're falling into the trap like many other countries have fallen in the trap previously, and that's what it is all about. Currently, there is a threat to the Russian Republic as a result of them coming closer to the Russian borders, the eastern side. All Russia is saying, stay away. Do not collude with the West, because the West, we all know, have a hidden agenda. What is their agenda? To want to wipe Russia off the map as well. That is what it is all about. There we are, my dear brothers and sisters. Here we have it in a nutshell. People will speak out. Somebody always will. And, people can make their own decisions. People can make their own judgments. We're not here to judge. It's simply sharing and caring. Jazakallah, Hami Bhai, thank you so much. Hami Bhai is joining me on YouTube and in chat. थैंक यू हामी भाई आप हमारे साथ हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग हमें YouTube पे भी देख सकते हैं और उसके अलावा Facebook पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी दुनिया के खित्ते में आप हैं मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद चलिए अब एक ब्रेक लेंगे ब्रेक आपको पता है कि ब्रेक लेना लाजम है क्योंकि वरना वो बेचारे भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो हम लोगों की नाराज़गी मेरे प्यारे बहनों भाई हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते लीजिए चलते हैं ब्रेक की तरफ ओ सुन रहे हो जी हाँ इसी तरह हजारों और भी सुनने वाले हैं आपके कारोबार की कामयाबी का राज सलाम BCR सुनते रहिए सलाम BCR जी देखो ना हमारा मिशन अल्लाह की रजा मोहम्मद से वफा पाकिस्तान का दिफा हम हैं सलाम BCR
Hami bhai, let's have a listen what you got to say for yourself, brother. Spot Blue International Property Agents. Looking for property in Dubai or Turkey? We have hundreds of selected properties to suit every client. If you're looking for investment property or owner-occupier, then let Spot Blue hold your hand and buy with confidence. Spot Blue, the international property experts who understand your language. Spot Blue. For a full list of properties available across the globe, check our website spotblue.com or phone 0208 339 6036. That number again, 0208 339 6036. And across all social media platforms, Spot Blue. This is Project Radio, online, on air, everywhere. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रेम्बो और आप मेरी आवाज़ इस वक्त जिस रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं उसका नाम है इस्लाम पीसीआर। इस्लाम पीसीआर की तमाम टीम को और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो सुनते रहिए इस्लाम पीसीआर। Things are slowly getting back to normal after living a very different life alongside COVID-19. As we go about our daily life spending more time with friends and family, shopping and visiting the mosque, there are things we can do to keep ourselves and our loved ones safe while COVID-19 is still in our communities. Here's a few things we can all do to look after each other. Wear a face mask if it makes you feel more comfortable when mixing indoors or in a crowded place. Fresh air is a great protector against COVID-19. Keep your home or workplace well ventilated. Open windows to let COVID-19 particles out and fresh air in. As the weather gets warmer, why not meet people outside? It's the simple things that make a difference, like continuing to wash our hands regularly, using a tissue to cover and catch coughs and sneezes, and staying at home if we feel unwell. You can still get your vaccine and the boosters. Visit the NHS website or call 119 to find out all your options. Why not ask them about the pharmacies across Bury offering a vaccine service? German Doner Kebab wishes you Ramadan Kareem. Visit your local GDK restaurant and enjoy your doner after dusk this Ramadan. Choose your favorites like the original German Doner Kebab and Boss Box, or try something from the new Doner 2.0 menu, where all dishes are £5 or less. German Doner Kebab. Kebabs done right this Ramadan. जी मेरे प्यारे बहनों, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे सलाम बीसीआर आफ्टर द ब्रेक। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका रोज़ा भी खैर वाफी से जा रहा होगा। मैं हामी भाई, कम बैक, ऑल इज़ फॉरगिवन, ऑल इज़ फॉरगिवन, ऑल इज़ फॉरगिवन। शायर साहब कहते हैं अन्ने रस्म रवाज ने थे, अन्ने रस्म रवाज ने थे, चोरां दे सरताज ने थे। अन्ने रस्म रवाज ने थे, चोरां दे सरताज ने थे। मुल्कों बार असासे रख के कर दे आके राज ने थे। मुल्कों बार असासे रख के कर दे आके राज ने थे। समझों बार नहीं मर्ज़ां कस्में, समझों बार नहीं मर्ज़ां कस्में, बंदे ला इलाज ने थे। वाह जी वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और साईं बुल्ले शाह ने क्या कहा था? साईं बुल्ले शाह ने क्या कहा था? मैं आपको साथ वो भी शेयर कर लूँ। जिथे होण अल्लाह अकबर, जिथे होण जहालतां बगले लाण अदालतां, जिथे होण जहालतां बगले लाण अदालतां, कां पै करन वकालतां, बगले लाण अदालतां कां पै करन वकालतां, सबनू मिलन जलालतां, सबनू मिलन जलालतां। दिल दा शीशा साफ नहीं रहिंदा, दिल दा दिल दा शीशा साफ नहीं रहिंदा, उत्थे फिर इंसाफ नहीं रहिंदा। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਮ BCR। हामी भाई क्यों वीडियो कॉल क्यों कर दिया? I can't get your video call because we're using too much internet. मेरा भाई just come in on a call. That's मेरा प्यारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता की मैं समझा दवां कि मेरे 3 4 5 6 चीज़ां चल रही ने इंटरनेट ते। तुहानू पता फिर वो streaming then it causes a problem. We can't get a video. Anyway, मैंने तुहाडी सोहनी शक्ल याद है, तुहाडी सोहनी शक्ल याद है। अच्छा आहो, सुनाओ हामी भाई, सुनाओ कित्थे बैठे हो तुसी? घर है हो? कित्थे सुनाइए यार, बस घर है, खत्म काम कीता थोड़ी देर पहले। अल्लाह लग्या है सपना यार, कोई कॉल आ जाती है तो पता ना बिजी हो जाईदा ते आहो भाजी ते कोई दुकान दा आ जांदा है। हक लाल दी रोजी भी कमानी है ते फिर मेहमानां नु मेहमान नवाजी भी करनी है कि नहीं? हां, मेहमान आए हुए हैं, मेहमान लंदन से आए हैं ते माशाल्लाह अफ्तारी बन रही है ते मैं अपना बैठा है ऐसा होने बैठा। आई एम स्टिल
क्या कहते हैं जिससे काम करो ना कोट पा के तो इंसान पसीना आना शुरू हो जाता है ना ते वो मैं अपना कर रहा था इन्वेंटरी देख रहा था कि माल हैगा मेरे को की माल नहीं है कितने का वो माल करके मैं निकल रहा था ठीक ठीक बस अपने इलामा इकबाल साहब ने क्या सी जी यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं मुझको तो गिला तुझ पे है यूरोप से नहीं हामी भाई क्यों ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਕੈਪਟਨ ਕੁਕ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਪ ਭੇਜਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਟੁਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਲੇਵ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜੀ ठीक है तो हिस्ट्री शोज दैट एक्सक्यूज मी मेरा सा गला खराब होया ते इन्हां ने यूज कीता सन लोकां ते ਅਸੀਂ मैनिपुलेट ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ और वो जो फिर लीडर साडे बने उसले वो लीडर किसा बने सन मैंने अभी नहीं समझ आती काजी आजम लीडर बन गया उधर महात्मा गांधी बन गया उधर दूसरियां चीज़ां सन उसले वो तो हमें भाई जस्ट वन सेकंड देयर के लीडर के देखो ना एक मेरा जान चीज़ होता कि लेट्स कम बैक हियर नाउ फॉर वेयर वी आर बेरी देखो अगर कोई खाना पूरी खाली है कोई खाना खाली है यू नो वेयर इज अ वॉइड एंड समबडी हैज इनफ कॉमन सेंस और वेकन्स अप एंड सेज कि यार यू नो तुसी ओके जस्ट यू डूइंग अ बिजनेस है ना अगर मिसाल तौर पर कोई होरे करदा हुंदा मे बी यू वुड हैव थॉट ट्वाइस कमिंग इनटू इट but you maybe saw a niche market and you have tried to corner it so you continue with it अगर तुसी छੱਡ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਦੇਖੇਗਾ ਯਾਰ ਉਹ he used to make a living out of it oh why don't I have a try ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ so ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ you see when you don't have it's when you people are complacent and they don't do anything they sit on their backside thinking ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਲੱਕੀਲੀ ਵੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕਰੇਗਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹਮੇ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਗਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਰੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਬ ਲੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਧਰ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ तो बंदे ने मैंने फोन किया उन्हें कहा देख मैंने हेल्प कर तो लोकल अथॉरिटी मैंने सुन रही नहीं मेरा फर्ज सी कि मैं बंदे ने पूछना पाया कि तू किस एरिया च रहना वो कहता मैं इस एरिया च रहना तो मैं क्या कोई गल नहीं इस एरिया का जो काउंसलर है ना वो मेरा भी काउंसलर फोन कर लिया हाँ जी मैं अपने पाकिस्तानियों भी किया फोन काउंसलर वो काम कराने वास्ते किसी ने जवाब नहीं दिता ठीक है जवाब दिता गोरे ने ठीक है ना उस गोरे ने किया वो कहता मैं डिटेल्स दित्तियां ते फिर लोकल अथॉरिटी पुछदी है बंदे काउंसलर कोलो तेरे कोल मैंडेट हैगी है बंदियां कोलो कि यू कैन टॉक ऑन देयर बिहाफ बिकॉज़ दिस इज अ सीरियस मैटर ठीक है उन मैं फिर बंदे ने दूसरे फोन किया करके मैं दस रहा कि मैं इतना परेशान होया फिर राती मुलाकात हुई वो काउंसलर ना गोरे ना अपने पाकिस्तान में ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਸਹੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ तो उन्होंने मैं गल की आए सर मेरे घर नौकर वास्ते मैं क्या इन्हें तो मेरा कुछ काम करता मगर साहिब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ
कोई हेल्प कर दो किसी दी कर देना मैं कल फोन करना दसना की हो रहा उन्होंने मैं फोन नहीं किया मगर जो गोरा काउंसलर है ना वो मैं कांटेक्ट रख रहा कि मैं मैंडेट मिल गया उन्होंने को ते आई एम ट्राइंग टू टॉक टू मेक सेंस ऑफ दिस एंड आई विल बी कमिंग बैक टू यू एक चीज होती है गुड पॉलिटिशियन दी बहरहाल ये जो चीज तुसी गल stay there 1 second stay there you see Hami मेरा प्यारा you know I say it as I see it जी and I see के साढ़े लोग जिहड़े ने ना with respect to every one of them with respect they have no clout they don't really represent the community they are chosen and you know they are chosen for their weakness they're chosen for their weakness and to how much they are going to speak up and speak out when you have nothing to lose you see like Imran Khan he has nothing to lose he doesn't want anything from the government exactly being in power he doesn't need anything but when you are a person in need yourself when you are a needy person yourself it is very difficult to represent other people fairly and with determination बिल्कुल और तुसी मैं तान देख वीडियो भेजी होगी एक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो दा उन्होंने चुनना सी ठीक है उन्होंने एप्लीकेशन बड़ी बड़ी जगह पे भेजियां बहुत जगह पे एप्लीकेशन गई है ठीक है और एक पाकिस्तानी वाहिद बंदा सी उन्हें भी एप्लीकेशन दी इंटरव्यू होया उस बंदे ने कहा कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लेनी ताड़े को वो कहंदे ने की है वाइस चांसलर दी तो तनख्वाह होंदी है ठीक है जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का तुम पता है ना उस बंदे ने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं पैसा चाहिए मैं सिर्फ यह चाहिए अगर मैं वाइस चांसलर बनना है इस यूनिवर्सिटी का तो मैंने कहा तुसी जॉब देंदे हो all I need for you to create the same university in Pakistan oh मेरा भाई it's not ताले पता है कौन है it's Imran Khan and this was Bradford University हमें भाई Bradford अभी के पार्डन सॉरी yes Bradford University गलत क्या yes समझ आ गई जी ते उन्होंने फिर जिस इंटरव्यू कीता जिससे उन्होंने फिर डिसीजन लेनी सी उन्होंने कहा यार ਇਹ तो बंदा साडे को कुछ मंगदा नहीं ते उसने ब्रैडफोर्ड विच ओ बनी ना चीज बनी ना ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਯਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ they are aligned they are joined up as a conjunction with the Bradford University they do the same syllabus and then the marking is exactly on that same basis exactly जो उनके thesis हैं exactly research work है exactly that is the name of the person but that's selflessness isn't it you know okay मैं तो नहीं दसना मैंने एक इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली go back when I became director of Chamber of Commerce ओ खुदाया ठीक है उसले मैं डायरेक्टर बनया था Chamber of Commerce का उसले मैं तेनु मेरी गल सुनना एक मैं तेनु ना बैन कर देना to go back less more than 3 years यार नहीं सुनने दी गल है ना किसी ने मैंने ऑफर की थी कि ए जॉब तेरे वास्ते है you can take that job you know what I said that मैंने उन किया गोरेन मैं कहा no Richard this is not right this is not equal opportunity you're giving me something just because I'm a director and my fit face because my fit face for you because I'm black you need to use me for that no way Richard this post should be advertised and should be advertised for people to employ for I'm still going to be director of this company, but there's no way I will take that post. No, absolutely fair enough. You got to know when something is being offered, why it's being offered. I agree with exactly. you. I agree with you. Exactly. कौन use कर रहा है सन? मगर साढ़े होने को ना वो funding available है कि 10,000 pound ले लो. But पता कि unfortunately this is it. Unfortunately we you know मैं अक्सर देखा हमें के when you see people with camera and a microphone. And they will go for the most incapable person because they can manipulate them. You understand? And our people don't seem to this is what I fail to get the point across. Our people don't seem to get the message कि भाई you know when somebody is putting the camera in your face doesn't mean to say you'll be famous they might make you look stupid. You understand? Oh बहुत सही कह रहे हो. You know this is quite right. मैंने रिचर्ड बिंडल से मैं गल याद आती है एक जगह पे मैं खलोता है ऐसा
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਈਕਲ ਹਾਵਰਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਸੈਂਟ ਜੇਮ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਿਚਰਡ ਕਹਿੰਦਾ do not take a photograph with them or ask them to come to you. Let them come to you. They are your servant. They are our servant. We elected them. It doesn't matter whether they're prime minister or whoever they are. Absolutely. We are here. We contribute quite a lot within our economy where we sit, and you do this voluntary. Hami bhai, listen, I think the most important thing is you have to have self-respect for yourself. You know, you have to have self-respect. Okay? After that, you give respect to other people, everybody and anybody. You give respect, and in return, you demand respect. Mera pera. That's my philosophy. Absolutely. You know. Absolutely. Looks like you got a house full, so I'll let you go. ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, नहीं, absolutely. ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ यूं ही फिर अफ्तारी हो जाती है, तो यूं ही फिर नमाज हो गई। मेरी बात तो सुन मेरी जान, मेरी बात तो सुन। मेरी बहन ने भी, छोटी बहन ने मुझे ऐसे ही दावत दी थी, और लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन द सिनारियो मेरा प्यारा इज़ कि as soon as I finished the program, then अपने नमाज हो गई, नमाज ख़त्म की थी, then I have to line up the playlist for the evening and for tomorrow, and you know, download stuff and get like the Taraweehs on and everything. So you can imagine, I'm literally. मैं समझता हूँ सर, आपको अल्लाह ताला इस चीज का अजर दे सर, अजर दे आपको। Tell me, you know those videos, those English Quran translation videos? Have you been listening to them or not? Have you been listening to them? सर, मैं बिल्कुल लिसन कीता है। और how many people have you got to subscribe to my channel? How many people have you got to subscribe? I urge you. I know you have. But I urge you, mera pyara. We need to grow those figures. I need you to urge you to. Inshallah, pass it on. I'll pass it on to my. और दूसरी चीज है कि जिसले गूंज दी है ना आवाज। हाँ जी। और I can't explain जो कन्ना में जिसले जाती है आवाज ताड़ी। It's so beautiful. अच्छा। So rhythmic. And so peaceful. I really mean. और दूसरी चीज है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ जी पीछे background scenery, that would be lovely. It is. There is a video scenery running behind it. You haven't watched it. You've just heard it. तारी फोटो आंदी है ना। नहीं मेरा भाई, you haven't seen the whole video. You need to see it's a half hour long. There's a scenery running at the back of it, behind the narration. Okay. But it's so nice. I didn't listen all of it. Yeah, listen. झूठ बोल के रोजे ना झूठ नहीं बोली था। There's going to be another one which is now done with the first 10 paras. I've made so 1/3 of the Quran. I've done one there, which has been now out, and then there's going to be another one with the next 10 paras, and so there's going to be three with the whole Quran, and then one individual paras in themselves. Obviously, well, we can only do what we can do, mera pyara. You know? अनवार भाई, मेरे छोटे भाई जी, प्यारे भाई, आपने जो इस वक्त रमज़ान शरीफ में शाजिया बहन ने जैसा प्रोग्राम किया, उनको हमें कमेंट करना चाहिए, उनको हम क्रेडिट देना चाहिए। थैंक यू। और हमारे अपना सैफ भाई ने भी। और जब भी मैं सुनता हूँ आपको, और मुझे पता नहीं नवीर भाई कहाँ है आजकल, मगर वो उन्होंने छुट्टी ली हुई है। अच्छा, चले तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे वापस। तो बाकी जो है इंशाल्लाह सारे हमारे जो प्रेजेंटर हैं, यही साहब भाई से मुझे बात कर रहे थे। अदरीस भाई इसी अदरीस देखो फिर गल वही आ गई कि जिन्हां लोगों ने टीके लवाए सी उन्हां नूं कोविड होया। बेचारा ही इज बीन सफरिंग विद कोविड, राइट? अच्छा, या ही इज हैड कोविड। एवरीबॉडी दैट्स जिन्हां ने नहीं लगवाए वो ते अल्लाह दे फजलो करम नाल बच बुझ गए ने, लेकिन जिन्हां ने लगवाए सी हुण मैनूं हासा आंदा है। हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। तू बाहर भी नहीं जा सकता, तू फड़िया गया है जी, छुट्टी भी लेके नहीं जा सकता। की करिए हुण? well there's हामी मेरा बारा, listen, there's always ups and downs, there's goods and bads, there's a positive and a negative, नहीं? Of course. Where there's a day, there's a night. Where there's white, there's black. Where there's whatever, there's always an opposite. Key? So we have to take it. Sometimes you have to pay a little price for whatever it is. I don't have a problem at the moment. लेकिन जब जाना पिया फिर देखांगे।
सर बहुत शुक्रिया अल्लाह ताड़ा तुम मैं खुश रखे मेरा बहुत जान है, वक्त अल्लाह तुम देंदे हो टाइम देंदे हो सर नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ really ਰੇਡੀਓ grateful ਸਾਡੀ to you. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟਸ ਐਨ ਓਪਰਚ्युनिटी ਉਹ ਫॉर ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾ ਯੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਔਨ ਥਰਸਡੇ into the studio so get your people कौन out सा हैं कौन सा your member of parliament your member of which parliament one how many which member of one parliament do you have I have one in south and one in north but which you one don't live I'm in the asking south do you yes I do live in the south oh are you in Bury South are you in Bury South yeah are yeah you all right well then yeah he's not your MP then is he no yeah ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ but he's a very ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਥਰਸਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੌਕਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਅੱਛਾ but I want you to rile the troops you know the troops and well I be asking question I don't care I be asking question Allah khair kare fir Allah khair kare I need to know what is their stand on certain things what is their issues on Kashmir what's their issue on inhumane things are being done to people of Syria why cannot they be allowed to come in just like Ukrainian what's the difference tell me well you'll have the right to ask the question mera pyara of course theek hai na all right lovely good to talk to you Ami have a nice iftari when you do the iftari mera pyara duaon ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ inshallah hai na inshallah Allah taala ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਸੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਜੋ ਹੈਗੇ अल्लाह ताला उन्हां दे घर भी खैर आफियत ना रहन आमीन और जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह शिफा देवे तंदुरुस्ती बड़ी मेहरबानी हामी भाई अल्लाह तने खुश रखे मेरा सोना टेक केयर अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज जी हमारे हामी भाई और मेरी तरफ से अहले खाना हामी भाई के घर वालों को सबके जो भी सुन रहे हैं और उनके मेहमान जो हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरी आप सब मेरे प्यारे बहनों भाइयों से गुजारिश है छोटे बच्चों से भी कि जब बच्चे मन के सच्चे तो जब वो भी अपनी अफ्तारी करें क्योंकि डबल अफ्तारी यार कोई बात नहीं आपने सुबह रखी फिर दोपहर सेकंड अफ्तारी की कोई बात नहीं है लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो अगर वो भी जब आप अफ्तारी करेंगे दुआ करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोगों हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जज़ा खैर दे चलिए अब आप एक कलाम सुनाता हूँ इंशाअल्लाह फिर उसके बाद चलेंगे ब्रेक की तरफ प्रोग्राम जारी सारी रहेगा सुनते रहिए सलाम BCR मौला 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 उदासी कैसी छाई है उलूबे अहले ईमान पर उदासी कैसी छाई